Good morning, students. I hope you are fit and fine as always. We already completed 3 chapters of social science. Today, my topic is how to write social science paper in any exam. All our preparation ultimately for exam only and scoring good marks in exam. So, today I will show you one video which gives you some tips how to write social science paper in exam. So, listen and watch carefully and note down important points. I will tell you some do's and don'ts that are actually very broad spectrum. You can put them in use in other subjects also, but especially in social sciences, I want you to remember these. Okay, the first point is read the question paper carefully. आपने सुना होगा सब बोलते हैं, from your parents to your relative to your friends, सब लोग आपको ये बोलते हैं read the paper question paper carefully. Why exactly? Because children, जितना thoroughly आप question paper पढ़ोगे उतना आपको पता होगा कि कैसे strategize करना है एग्जाम को. You might think that it is a time wasted that you are putting in reading the question paper because you anyway have to do all the questions. No, you are making a mental strategy while you are reading the question paper. So please do it very, very carefully. Also, some questions are overlapped, some questions are in choice. और कितनी बार होता था मेरे साथ तो एटलीस्ट कि पीछे जो पेज के लिखा होता था वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना ही भूल जाती थी. So don't do that mistake. Read the question paper thoroughly. At least spend 5-10 minutes on reading it. Okay? Second point, first attempt objective and map based question. Also इस बार तो picture based question भी आ रहे हैं. तो वो जो free के marks हैं, map questions, objective questions and picture based question, I want you to attempt them सबसे पहले. Theoretical questions बाद में हम time save कर लेंगे इन questions से. ठीक है? अभी चलते हैं आगे. कंसिडर कि आपका सोशल साइंस का एग्जाम 2.5 hours का है. क्यों बोल रही हूं मैं ये? Whenever you are practicing the mock test paper or whenever you are practicing any sample paper, I want you to remember कि पेपर सिर्फ 2.5 घंटे का है. क्यों? क्योंकि आपको चाहिए एटलीस्ट 15-20 मिनट्स रिवाइज करने के लिए और बाकी थोड़ा बफर टाइम तो लेके चलते हैं. क्वेश्चन पेपर रीड करना है, अंडरलाइन करना है, ऑल ऑफ दैट. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी very well. Cool? Okay. Attempt all the questions. Yes, very important. 3 mark का question favorite topic में से आ गया है, उस पे आधा घंटा नहीं लगा देंगे. We will spend only adequate amount of time on each and every question. Why? क्योंकि question attempt करने के भी नंबर होते हैं. सारे questions attempt करने हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जो choice में जो questions आएंगे उसको सबको attempt कर दो. नहीं. If you are thinking that if you will attempt both the questions in a given choice, you will be awarded. No, it doesn't work that way. You know what happens? No invigilator reads both the questions, both the answers and then decides कि कौन से वाले में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो कौन से वाला चेक कर दूँ. कोई नहीं करता ऐसा. So they simply go with the first question that you have attempted. तो ऐसा नहीं करना है. दोनों क्वेश्चन टर्न नहीं करने हैं चॉइस वाले. हमें देखना है हमें कौन सा अच्छे से आता है और वही क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करना है. Cool? अच्छा चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस के बीच के 2 पार्ट्स में चॉइस होती है, राइट? फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन नंबर ए बी सी. अब बी वाले में 2 पार्ट्स में चॉइस है. तो ये एक बार जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो प्लीज अच्छे से देख लेना. Cool. अभी चलते हैं आगे और मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहना है. I've been telling you to solve previous year question papers. I've been telling you to solve the sample paper given by CBSE and also some of the mock papers if you have time. Why? Because I want you to prepare in a way that you're not spending more than 2 minutes on a 1 marker question. Yes, 2 मिनट से ऊपर हमें स्पेंड नहीं करना. हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे खुद को. या तो मैक्सिमम इफ यू हैव टू राइट इन अ 1 marker question just 2 points. या मैक्सिमम इफ यू हैव एम्पल टाइम यू कैन राइट 3 points. छोटे छोटे 3 points सीखे, वरना 2 points सफिक्स्ड है. डेफिनेशन है तो वेल एंड गुड, डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, खत्म करो. ठीक है? नॉट मोर देन 25 to 30 words आई वॉन्ट यू टू राइट इन अ 1 marker question. क्योंकि 1 नंबर से ज्यादा थोड़ी मिलेगा यार उसमें, राइट? Now let's talk about the 3 marker question. The time limit is little increased now. The time limit is 3 to 5 minutes depending on the question. But again,
पॉइंट्स में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखेंगे, और हम मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखेंगे और मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिख के ही आएंगे. 80 to 85 words we will at least write. Okay, now 5 marker question. How much time should we spend on it? Let's say 5 minutes. 5 मिनट से 8 मिनट से ऊपर हम टाइम स्पेंड ही नहीं करेंगे 5 मार्क का क्वेश्चन में. 8 मिनट्स मैक्सिमम. ओके, कंसिडरिंग कि आप बहुत स्लो लिखने में, मान लेती हूं मैं. कितने पॉइंट्स लिखेंगे हम? एटलीस्ट मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लिखेंगे. 1 मार्क का 1 पॉइंट. ऑल्सो वी विल राइट 6 to 7 पॉइंट्स इन मैक्सिमम नंबर. अच्छा चिल्ड्रन, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज 5 मार्क का क्वेश्चंस आर ऑलवेज इनटू, नॉट ऑलवेज, यूजुअली इनटू 2-3 पार्ट्स, राइट? सो वी विल मेक श्योर कि हम क्वेश्चन थरली पढ़ें. और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि एग्जांपल लिखो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस एग्जांपल के भी नंबर हैं. ओके, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन पेपर थरली. Then, how to make the answer script presentable? This is the trick that sets your paper apart from the other papers. So now I know you people would be saying that ma'am writing ही अच्छी नहीं है तो अब कैसे presentable बनाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Even if you don't have a very beautiful writing, you can still make your paper very very presentable, which would show how much you care about your exam, how much sensible you are about attempting the question paper. What are those tips and tricks? Let me tell you. First point, use correct facts and figure. अगर आप किसी फैक्ट या फिगर के बारे में श्योर नहीं हो तो उसे मत यूज करो. फॉर एग्जाम्पल 1919 जलियांवाला बाग हैपेंड. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, डोंट मेंशन इट. रॉन्ग डेट वुड मेक अ बैड इंप्रेशन, राइट डेट माइट नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन. ओके, क्योंकि यू आर सपोज टू नो द राइट डेट. तो अगर नहीं पता है, नहीं लिखेंगे. और स्मार्ट तरीका एक बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 7500 kilometers is our coastline. Something else is also there, but I don't remember the 500 something part of it. I just remember 7000. So what I'll write is more than 7000 kilometer is my coastline length. Easy peasy. I'll just break it up in a way which is smart also and correct also. Okay, and write legibly. Yes, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो पूछा है वही लिखो. डाइग्रेस मत करो टॉपिक से. डाइग्रेस करने के नंबर नहीं होते हैं. देन आंसर टू द पॉइंट. अगेन सेम पॉइंट कि टू द पॉइंट आंसर दो यार. 3 नंबर में 3 नंबर ही मिलेंगे, 5 नंबर में 5 नंबर ही मिलेंगे, 1 नंबर में 1 नंबर ही मिलेगा. तो सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है और आगे बढ़ देना है. ठीक है? Write good examples. Very important, children, especially for the 3 marker and the 5 marker questions. I want you to put the examples even if the examiner hadn't asked you. Question paper में नहीं भी लिखा example लिखने को, तो भी हम मेंशन करके आएंगे. 3 मार्क में हम एग्जाम्पल सिर्फ मेंशन कर देंगे, 1 मार्क में भी सिर्फ मेंशन कर देंगे, लेकिन 5 मार्क में हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे एग्जाम्पल को. ठीक है, ये रूल याद रखना. Now, distinguish between questions can be written in tabular format. It looks really nice. Take it from me. Make a table and write. अच्छा, by the way, I forgot to tell you. Please draw margins also. Okay, margin बहुत important है. और margin हम ऐसा नहीं डालेंगे कि पूरा मतलब पेपर ही margins में चला गया है. इधर से इतना सारा margin, उधर से इतना सारा margin. No, no, no. That you don't have to do. Please make a sensible margin in your paper which doesn't make you look like a cheater कि ये cheat code कर रहे हो आप. आपको थोड़ा लिखना पड़े इसलिए आपने broad margin draw किया है. नहीं, अपन ठीक ठाक सा मार्जिन ड्रॉ करके आएंगे. ओके, also try to draw simple flow chart for classification or types. For example, they have asked different type of the soils और आप सब कुछ लिख रहे हो, तो अगर आप उसे टेबल में एक बार सिर्फ ऊपर लिख दोगे ना, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है. Also it gives you a break, right? We also get bored like an invigilator कि यार कर रहे सब कुछ पॉइंट्स में लिखा है, सब कुछ पैराग्राफ में लिखा है. Suddenly there is a table in front of you or suddenly there is a flow diagram in front of you and you're like okay, now I'm hooked. Okay, so ऐसा करके आएंगे पेपर में. Very important point. Then underline or highlight important points or bulletin. Now this point is optional, children. I do realize some of you have high speed and some of you don't. Okay, I do realize it. Okay, so if you have time remaining, I would want you to underline the important points. If you don't have, let's say you are a slow writer, फिर भी मैं चाहूंगी कि जैसे जहां से definition शुरू हो रही है, for example, I am asking you a definition of renewable resources. So renewable resources को प्लीज अंडरलाइन कर दो, बाकी कुछ करो या ना करो. ठीक है? Then write correct question numbers.
Oh, I cannot put in, more stress on this point. मतलब आंसर नंबर प्लीज चेक करके आना. रॉन्ग आंसर नंबर है, nobody cares to look at your answer. So आंसर नंबर हमेशा चेक करके आएंगे एक बार. ओके, स्पेशली द चिल्ड्रन जो बीच बीच में से क्वेश्चन उठा के पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, सेम फ्लो में नहीं करते. बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो ये. Okay students, I hope this video and these tips helps you in writing while writing in your exams. Okay, bye.